Hello everyone, good evening. Welcome to odishacivils. आज हमें start करिबा go with a different approach and that is your basically UPSC. Okay, UPSC Prelims PYQs हमें discuss करिबा. Okay, just in a while. Hello, am I audible to everyone? Is it okay? Hello. Okay, thank you all of you, thank you. अच्छा, so देखिए कि what is the very basic requirements why I thought to go for this type of question series. ए भितर हमें question जो analysis करिवा will go for the discussions. Means I mean प्रत्येक गोटे गोटे questions करिया, questions परे तापरे हमें discussion टा माने answer discussion टा will continue that one. Why it is so much important? Because the changing pattern जदि हमें देखिया कि changing pattern जो बड़ा होची question रो हमरा OCS level ले भी इटा help करियो. These are the previous year's questions of जदि देखिबा previous year questions of UPSC and definitely इटा help रहिबो. अच्छा, one by one वर्तमान देखिबा first question geography and geography पर धीरे अलग subject भी हमें will go into environment and other chapters also will go, right? अच्छा, first question हम कहिबे समस्तन को कि first question हम करिबा जे okay, just a minute. First question देइछे, the Narmada river flows to the west while most of the other large peninsular rivers flows to the west. Why? That is it. Good evening, Suresh. How are you? Okay. So kahi ke question ta dela ki eta previous year kono si year jodi dekhibo mu last प्रायः तम मानकु ए series रे हमने last 15 more than 15-18 years रे हमें questions हमें सब देखिबा UPSC almost 20 years back रे भी जदी हम देखिबा but majority 15 years back रे questions कला त हमर बहुत सारा clarity रहयो. First question मु देबी Indian geography हला एथरे ए जो PY की series रे हम discussion करिबा एथरे both India and world मन रखो both India and world दीटा हमें रहइबो ए geography discussion रे हला UPSC रे related रे हमें पढिबा. ठीक अछि question series रे both India and world. Yes, God bless you, Bijan. God bless you. Okay. So, it am kariba Narmada river flows to the west while other our river flows to the your east. Why? First question, it occupies a linear rift valley. It occupies a linear rift valley. It flows between the Vindhyas and Satpuras. Third, the land slopes to the west from central India. या भितर कौन होगा आंसर? Anyone can say. समस्त नहीं परिवा step. Yes. Thank you. I am fine, Saros. I am fine. Suraj, thank you. After a long time. Okay. एटी आंसर जदि हम देखिबा कोन ही परिबो एनीवन कैन आंसर समस्त पार्टिसिपेट करो द मोर यू पार्टिसिपेट धीरे धीरे तुम माने इथरे एक्वेंटेड हे जो और केमति रहियो आंसर कोन देछि चॉइस देछि चॉइस देखिबा 1 only 2 and 3 only 1 and 3 only none आंसर जदि हम देखिबा आ भितरु बहुत सारा जगह रे बहुत सारा गुडे जदि तुम आंसर देखि दबो बहुत सारा प्रकार आंसर दोछि बट मन रखो हमें एनालिसिस करबा कौन होबो एग्जैक्टली मींस आई मीन इफ यू गो फॉर द एनालिटिकली कौन हे पारे बहुत सारा बही रे याडी सोडू आंसर की गोज ओनली 1 की गोज नॉट की गोज 2 and 3 बट आंसर जदि देखिबो इट इज सी नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई तार हमें डिटेल एनालिसिस करबा मु एटा चूज करली कोन इट ऑक्युपाइज अ लिनियर वैली एब्सोल्युटली करेक्ट it flows between the Vindhyas and Satpura it doesn't hardly any means that why the Narmada flows to the west right
कहीं ना नर्मदा जदि कहबी नर्मदा कहीं फ्लोज करुची वेस्ट को दिस इज योर विंध्यास राइट दिस इज योर विंध्यास एंड दिस इज योर सतपुरा राइट विंध्या सतपुरा नर्मदा is flowing like this one this is your narmada right this is your narmada river this is your vindhya and this is your satpura ठीक अछि this is your narmada river this is your river narmada so एटा this is not suffice to explain third रे कोन the land slopes to the west from central India absolutely correct so answer दिबो C explanation देखिबा कोन पई प्रथमे या पूर्व जिबा पूर्व प्रथमे देखिबा what is linear rift valley what is linear rift valley very good answer के देले विजन सूरज एंड प्रणित वेरी नाइस बहुत बढ़िया आंसर जदि हमें देखिबा कोनटा देखिबा काहे की आंसर जदि देखिबा काहे की देखो जदि हमें देखिबा कि व्हाट इज रिफ्ट वैली कोन हुए जतले प्लेट मोशंस हुए गोटे लैंड जतले सबसाइड कर दिए व्हेन देयर इज अ लैंड सबसाइड एग्जैक्टली विंध्या और सतपुरा मझरे लैंड ता तळकु दबी जाय सबसिडेंस हेछि दैट फॉर्म्स एन रिफ्ट वैली जेंति हमें पढू जियोमॉर्फोलॉजी रे कोन पढू दिस इज योर ग्राबेन दिस ऊपर पोर्शन ता जतले उठी जाय ऊपर को दैट इज कॉल्ड योर ग्राबेन हला और तळ पोर्शन ता जो धसी जाय जोटा हला तुमरो दैट इज कॉल्ड योर right that is your graben and sorry this is called your block land this is your host or this is called your rift or graben exactly बिंध्या संगरे एम जिंसटा हेछि गोटे पर्सन ऊपर को उठी गला आ गोटे तळ ऊपर गेला ए जे ऊपर को उठी गला हला सेटा कहंती ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन होस्ट और ब्लॉक माउंटेन के ताको कहंती तळे जोडा धसी गला दिस इज created because of subsidence hela because of subsidence so eti mu lekhli same jinsa the rift valley formed between the vindhyas and satpuras is a narrow elongated bhala be bujho narrow elongated trough shaped lowland trough mane dobbi jaichi right it occurred due to the subsidence of the land ta tolku dhasi gala this is what tam eti dekhile ei jo land ta this is a narrow rift valley this is a narrow rift valley okay narrow rift valley कौन पे है कि because of your subsidence this is the your basics fundamental right next देखिबा because of the tilting आउ कौन होई फिर सेकंड काहे की तमरो पुनी वेस्ट कला because of the tilting of the Indian plate हमर जो Indian plate ता अछि एक्चुअली एमती हेछि देखो ए आडू के एमती दबी जाई दी आडू माने tilting हेछि माने बेसी tilt हेछि कोड को ईस्ट आडू बे ऑफ बंगाल आडू तो कौन हला so slopes occurred at both the sides both side आडू माने बे ऑफ बंगाल आडू हेछि plus tangara Arabian Sea adku bhi hechi so hence slope is formed hence chronically and in case of Narmada the slope is from the central India towards the Arabian Sea jehetu tamara slope formation hechi jehetu tamara land ta dabi mane tilt hechi to eti kon hechi Indian eta ko empty tilt hechi epot ko slope bhi hechi epot ko slope bhi hechi Narmada case re kon hala jehetu slope eta hala slope one slope towards east hala slope towards east mane Bay of Bengal I would tell you slope towards Arabian Sea, Arab Sea. So, a case record Narmada 80 padla. This is what about happens with the Narmada. So, is it clear? A budya magar pari jaddi tame gotti questions karucho, you will get n number of your doubts clear. Jo thre tomara alga variety question pachale tame aram se kari pariba. I hope it is clear now. Second question jiba. On the planet Earth, most of the fresh water exists. बहुत बढ़िया question. On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice cap. Ice cap रे रहे ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion कोठी हुए. बढ़िया question है. आ माने questions कोची हैला सब जगह previous years questions UPSC रा हैला ता माने इट कोन कोची कि वर्ल्ड रे जत्ते कि fresh water अछि maximum are available in your ice caps and glaciers. जदि देखिबा एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग आउ जति की बंचिला से आउ कोठी देखा जाय कोठी द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जति की रहला कोठी मिले तो इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑन द मॉइस्चर चॉइस ए चॉइस बी इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर लेक्स एंड द रिवर्स एक्जिस्ट एज अ ग्राउंड वाटर सी रे डी ऑप्शन देला एक्जिस्ट एज ए सॉइल मॉइस्चर की कहि परियो पिला माने Pranendu likhile sir nice explanation and after many years I found about this oh thank you so samaste answer kon to samaste participate karo I would expect everyone to participate ki kon hobo ki soil moisture ground water lake rivers au atmosphere and clouds
मैक्सिमम आंसर दोचो ए सी हैं कि जन आंसर दोचो ए बी सी डी भितर तुम नेबी कि सब आंसर दोचो बहुत जन ए को चूज करछो बहुत किछि जन सी को चूज करछो एस7 ओके ए सी भितर आंसर टर जदि हम आंसर करेक्ट आंसर देखिबा करेक्ट आंसर इज योर ग्राउंड वाटर सी लेट अस नो द डिटेल एग्जांपल राइट डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिबा डिटेल एक्सप्लेनेशन कोन हैला मन रखो आफ्टर द आइस कैप्स जदि मु नेबी आफ्टर द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स the groundwater accounts 30.1% right approximate world's fresh water ice क्या वो ग्लेशियर परे तार मेजॉरिटी गला तापर जदि हमें देखिबा ता भितर हला ग्राउंड वाटर केते 30.1 approximate world of fresh water तापरे while fresh water in lakes and rivers contain only 0.9% ठीक है तो एटा गोटे बहुत फैक्चुअल डाटा बट इट इज वेरी आल्सो एसेंशियल टू नो कि वर्ल्ड रे हमर केमती डिवीजन हेची केमिस्ट्री मींस आई मीन हाउ द फ्रेश वाटर डिवाइडेड बहुत जनकर अछि यार रिवर लेक तम एते देखछु नो एब्सोल्युटली नॉट ग्राउंड वाटर तळे तामन जदि हम लिथोस्फियर तळे क्रस्ट तळे हम देखियो बहुत सारा वाटर दैट इज इन द माने दैट इज इन द सैंडविच फॉर्म सेटा कोड इज एंटायर हमर जदि हम देखिबा पूरा अर्थ रे हला क्रस्ट तळे मैक्सिमम जगह रे सेटा पूरा रहिछि हला बिलो क्रस्ट मन रखो it is below the crust hela mane continental crust tole achi it's not oceanic crust it's continental crust so is it clear now next question dekhiba sk7 ji answer dechen wings ro bahut bada is very nice see answer okay next dekhiba consider the following next question kon electromagnetic radiation prathame dela electromagnetic radiation then geothermal energy third gravitational force fourth plate movements rotation of the earth fifth sixth revolution of the earth question kon dechi suniba which of the above question bhala abi suno which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth माने earth रो surface रे जो भी changes आसुची आंको भितरु किए responsible देखिबा आंसर दिए समस्त पार्टिसिपेट करो बहुत बढ़िया क्लास रे आंसर तो चलची वेरी नाइस आई एम सो हैप्पी टू सी सच एन इंटरेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स कौन दीजिए 1 2 3 4 दिला 1 2 3 4 ओनली 1 3 5 6 देन 2 4 5 6 देन 1 2 3 4 5 6 ऑल को भीतर हबो मिडी एटी देखिया एटी मु करची तमरो गोटे एबीसीडी मु करची के कोन आंसर दोची देखो यस क्वेश्चन नंबर एमती आंसर देला लिखियो क्वेश्चन नंबर 3/ABCD जाबी यस के दो आंसर एनीवन बीजेन आंसर देला सर इट इज सी ओके नेक्स्ट एमती दो क्वेश्चन नंबर एमती यू हैव टू आंसर लाइक क्वेश्चन नंबर 3/A और B और C और D अभी तो जोटा भी लिखियो तुम यस एनी अदर वन ओके so C को चूज करछो anyone any other answer अच्छा आउ कि जण भी दोचो also C भी लिखिछो S7 जदी भी आंसर देखिबा भितरु करेक्ट आंसर इज योर जदी देखिबो इट इज योर revolution of the earth is correct one by one तळु मु जाउची rotation of the earth is also correct then plate movements माने plate tectonics बिल्कुल correct next geothermal माने भितर जो हमर रहउची कोन भीतर जदी रहउची हम देखिबा magma movement of magma that is called the geothermal energy माने internal heat geothermal energy माने internal heat हला internal heat तक कहवा दे geothermal energy gravitational force has not directly affect your dynamic consequences on the earth's surface right so this is not counted electromagnetic radiation कोट से sun का पकड़ बिल्कुल भी नहीं so 1 out 3 गलत 2 4 5 6 is correct आंसर कौन देखिबा it is C is the correct answer right very good Panendu and Vision okay तीन जन को बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर देला दिस इज सी देखिबा एक्सप्लेनेशन कौन देखो कौन मु कहली जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली इट इज द इंटरनल एनर्जी सब बड़े कांसेप्ट मजर कैलकुलेट रखो कांसेप्ट शुड फर्स्ट कांसेप्ट जानिया दरकार जियोथर्मल एनर्जी कौन माने इंटरनल एनर्जी अर्थ रो इंटरनल एनर्जी ऑफ द अर्थ जियोथर्मल मींस internal energy of the earth geothermal energy right is the internal heat from the earth derives the process like kon
plate tectonics, plate movements, volcanism and earthquake. So first option is correct, geothermal option is correct, right? The most next I would कौन लिखा था पूर्व plate tectonics or plate movements. Plate movements जो कौन होची, plate movements is a primary cause for the formation of the mountain. Plate tectonic, plate movements जो कौन होची, Himalaya create. We know the creation of the Himalaya is because of the collision of the Asiatic plate and Indian plate. जो एमाने जो collision है तब तो Himalayan formation है. And so also many other fold mountains in the world have created because of the plate movements, right? So खाली mountains हला, plateaus हला also हम जो देखिबा छोटा नागपुर प्लेट्यू, धारावाड़ प्लेट्यू, अरावलीज रे भी अछि हला, सब जगह एग्जांपल हम देखिबो ओशियनिक ट्रेंचेस, वोल्केनिज्म. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट अर्थ रोटेशन जो कोन होची कॉजेस योर कोरियोलिस इफेक्ट. कोरियोलिस इफेक्ट माने पृथ्वी रो जो बुलुची स्विलिंग हला, कोरियोलिस इफेक्ट होची. कोरियोलिस इफेक्ट जो योर विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट डायरेक्शन जाउची. इफेक्ट व्हिच इन्फ्लुएंसेस द ओशियनिक करंट ग्लोबल wind pattern later leads to erosion and other surface changes. जेहेतु wind ऊपर affect पकोची अर्थ रोटेट करची. केमती अर्थ रोटेशन केमती हमें जानि चंदी, the अर्थ रोटेशन जदि हमें देखिबा, ओके हमर अर्थ वेलोसिटी केते, रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ केते की कहि परिबो, रोटेशनल वेलोसिटी of the earth केते हमें जानि चंदी as per proof that is near about 29.8 meter per second. Please note it. Earth rotational velocity 30 meter per second, 29.8 or 30 meter per second हमें कहि परिबा. एटा हला अर्थ हमर बुलची प्रति सेकंड रे 30 मीटर अर्थ बुलची, because we are so tiny we cannot feel that one, right? So दाजो को कोन होची ओशियनिक करंट ग्लोबल विंड पैटर्न होची. नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो कोन होची, combine the axial tilt, it causes the seasonal changes हला. अर्थ जो revolution करची, revolution माने कोन, अर्थ your round about the sun, सूर्य चारिपटे जो बुलुची revolution होची ताजगु. It causes seasonal changes that affects the weather patterns, erosion and biological process. Hence एई चारटा जंक हला डायरेक्ट इंपैक्ट करचन कोनडे क्वेश्चन देची डायनामिक चेंजेस. सबले मन को क्वेश्चन टाको बुझियो डायनामिक चेंजेस कोन माने डायरेक्ट पैटर्न, माउंटेन क्रिएट होबो, ओके प्लेट्यूज क्रिएट होबो, ट्रेंच क्रिएट होबो, ओशियनिक विंड रो पैटर्न चेंज होबो, एरोजन होबो, वेदरिंग होबो, बायोलॉजिकल प्रेशर अफेक्ट होबो. दैट इज कॉल्ड योर डायनामिक चेंजेस. फोर्थ क्वेश्चन जिबा, ठीक अछि. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस वन. सूरज लिखला सर ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेस मास वेस्टिंग इवेंट्स एंड ग्रेविटी ऑफ मून. नो सूरज मैं एठी गोटे क्लैरिटी करबी, जदी हो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स रे हमें नबा हला कि कहार ग्रेविटेशनल फोर्स दीटा काम करे सूरज, सन रो भी मून रो भी हला, टाइड्स भी होची, but mass wasting testing that doesn't directly affect the dynamic changes. Please note it carefully. सेटा induced effect हुए, that is not directly एमाने इन्वॉल्व होचन हला. आउ थरे भले आबे पढो, मु गोटे जिंस समस्त को सजेस्ट करिवि एनसीईआरटी पढो, जो जिंस रो एक्सप्लेनेशन दियो ताकू भलो भाबे करो बुझियो. एटी कोन हला गोटे हला डायरेक्ट इफेक्ट आ गोटे हला इंड्यूस्ड इफेक्ट. एमाने सब हला डायरेक्ट इफेक्ट, राइट? एटा जेमति तमे देखलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोठो आसी फ्रॉम सन, सूर्य को पाखरो आसी, तो यार कोनोसी इफेक्ट नै हमर डायनामिक चेंजेस पे. ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी सेमति डायरेक्ट किछि हमर होनी, इट इज एन इफेक्ट, राइट? आमुकिटा कोन कहूची डायरेक्ट इफेक्ट में डायरेक्ट कॉज, राइट? अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया. आ भीतर किए मैक्सिमम कंज्यूमर वाटर किए? आंसर दियो. ए इंजीनियरिंग, बी पेपर एंड पल्प, सी टेक्सटाइल, डी थर्मल पावर. या भीतर को इंडस्ट्रीटा मैक्सिमम वाटर तमरो कंज्यूम करे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा आस्तला यूपीएससी, बहुत बढ़िया. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्टेस्ट आंसर गिवन बाय प्राणेंदु एंड विजन. ओके डी समान थर्मल पावर को चूज करचंदी. एनी अदर आंसर वी कैन से? सूरज also you went for D. समस्त D जाउछ, and yes D is the correct answer. Right? D is the correct answer. अच्छा इथरे बेसी देखाओनी म उथरे राई कर दोछु. D is the correct answer, right? D is the समस्त कोच, D is the correct answer. Yes, thermal power is the correct answer. वर्तमान देखिबा, as per Bureau of Energy Efficiency BEE,
ता द्वारा कौन हिची ता भीतर देखिबा as per Bureau of Energy Efficiency government तार सर्वे रिपोर्ट रे कहूची among the water intensive industries the thermal power plants are the biggest user of water. Hela thermal power plants, they are the biggest user of water, accounts 88% of total industrial water. जेत्ति कि समान यूज करछन्ती हला ता भितरु thermal power 88% of total industrial water use को समान करछन, right? It is followed by engineering 5.05%, pulp and paper 2.26%, textile 2.07. ता माने एथरु भाबो कि सबुडु अधिक अछि हमर पावर प्लांट 88%. तापर तमर जांगे सेकंड राउसी योर इंजीनियरिंग 5.05 and paper and pulp and paper 2.26 and textile 2.07. आकु किए करूची इंडिया रे गोटे डिपार्टमेंट अछि BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मन रखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी ओके ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी I'm sorry Bureau of Energy Efficiency. This is an government body, PSU body. That's major role is to calculate common को क्या data दिए कौन खर्च हो चाहिए BE. The GOI माने Government of India assigned BE to set of agencies to encourage the conservation of water. वर्तमान Government of India कौन करची through agency BE द्वारा agency set up करा होची to promote these industries. These are the water intensive industries. मन रखो दी टाइप रे क्वेश्चन पचारନ୍ତି water intensive industries से माने प्रमोट करछन्ती केमती कंजर्वेशन ऑफ वाटर करिवे से जो वर्तमान नुवा जो पावर प्लांट बनना होची हला across the all over the India they are using open cycle. Okay, sorry, they are restricted the open cycle, closed cycle माने प्लांट भितर से माने बड़ बड़ सब तालाब करछन माने I mean reservoir करछन artificial reservoir. They use the water and recycle and send it to the turbines. Again, that wastage water again go to the same to the other pond where it is recycled and reused again. That is what the conservation water has been initiated from last 5 years and taken by the your government of India, and of course the judiciary intervention also there, right? So ida मन रखियो कि BEE, that is Bureau of Energy Efficiency. Fifth question करो. To obtain full benefits of demographic dividend, what should India do? But question pacharchi, to obtain full demographic dividend, what India should do? Promoting skill development, A. B. Introducing more social security scheme, C. Reducing infant mortality rate, IMR, D. Privatization of higher education. कौन होगा आंसर? A, B, C, D. कौन होगा आंसर? But if sir your engineering is there an option, then every power plant comes under engineering, and so why it is not considered? अच्छा ता पूर्व क्वेश्चन अच्छा प्राणित पचारछन्ती कि इंजीनियरिंग नो एक्चुअली देखो देयर आर जदी मु नेबी प्राणित क्वेश्चन से पचार इंजीनियरिंग अंडर समस्या आसुन काई कि होबो देखो इट इज स्पेसिफिक इट इज दीटा जिंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन पचारले इंजीनियरिंग भितर सब जदियो आसुंदी इंजीनियरिंग भितर इलेक्ट्रिकल भी हेई पारि इलेक्ट्रॉनिक्स भी हेई पारि बहुत सारा जिंस हेई पारि बट जेहेतु इट इज स्पेसिफिकली दे देछि थर्मल पावर प्लांट देन इट इज had it been not there जदि ऑप्शन टा न थांता then you would go for the engineering. Is it clear जदि इट ऑप्शन टा न थांता थर्मल पावर then you could have जेहेतु देई देछि that means it has specifically पचारछि. I hope it is clear now. Okay. Fifth question da कि obtain full demographic dividend हैला demographic dividend what should India do? Promoting skill करिया दरकार, introducing more social security schemes, reducing infant mortality rate, then privatization of higher education. Suraj कहउचंती A, also A, okay, also A, maximum समस्त A कहउच promoting school development. Okay, any other answer I would expect, any other answer? Okay, जदि मु आंसर देखिबी यार आंसर जदि देखिबा आंसर इज करेक्ट, ये इज करेक्ट, बी सी डी हबनी, बी सी तो बिल्कुल भी हबनी जदि हमें एजुकेशन आ भीतर नबा देन प्रमोटिंग इट दिस वन, सो ए इज द करेक्ट आंसर, बी सी डी हबनी.
now the first question is that UPSC रे मन को ट्रेंड सब बड़े एनालिटिकल फैक्टर जानिबो दरकार वर्ड रे से माने खेलंती माने मीनिंग टा प्रथम देखिबा कि व्हाट डू वी मीन बाय द डेमोग्राफी डिविडेंड demography means it generally it pertains to the structure. What is the structure of the your population structure, right? Demography dividends means it is the population structure को बुझाए को age structure को बुझाए. Second thing, dividend माने कौन माने किसी economic term आसी माने it is directly impacting the economic growth of the country by utilizing its population. That is called the demographic dividend. ता भितर कौन हबो? Let us know. आमे जानि चंदी India is the now to congratulations to us कि आमे world highest population country. Okay, more near about approximate 145 crore population. या भितर young population हमर बेसी अछि. Let us know a demographic dividend explanation देखिबा कौन अछि? A demographic dividend refers to the economic growth potential that can result from shifts in a population age structure. बहुत भला बे बुझो shifts in a population age structure, right? Especially when the base of the working age population is larger than non-working age, right? Non-working age. ता माने कौन कहूची हमर डेमोग्राफिक डिविडेंड रे कहूची कि shift from in a population age structure, especially working age population is larger. माने larger अछि ध्यान द non-working जोटा कि वर्तमान इंडिया रे कंडीशन टा सेया. ओके हमर वर्किंग एज पॉपुलेशन टा बसी एडल्ट एज का कुआ जो एडल्ट एज ऑफ पॉपुलेशन जदि हम देखिबा व्हाट डू यू मीन बाय द एडल्ट एज पॉपुलेशन. एडल्ट एज माने 18 रु नेकी 59 एज इयर्स पर्यंत को कुआ जिवो हला एडल्ट एज. दिस इज कॉल्ड योर एडल्ट ह्यूमन. ए माने ही देश को कैपिटल ए माने देशर एसेट ना कैपिटल ए माने ही कोन करिवे वर्क टाकू से माने डी माने कोड करिवे टी कोड करिवे मॉनिटरी रे, राइट? So it देखिबा to fully utilize the potential of the working age population, country must invest and promote skill development education program. Skill development education program वर्तमान तक country must promote, okay, which certainly enhance human capabilities, productivity, thus accelerate the economic growth. That is called the promoting. So India वर्तमान देखिथिबो skill enrichment program government has much initiated. बहुत जगह skill enrichment program होची. सर्व शिक्षा अभियान को प्रमोट करा होची. मेक इन इंडिया को जगह मुझे कहबी प्रमोटिंग स्किल्स माने कोडा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को रखा होची. ओके मेक इन इंडिया प्रोग्राम एपट देखिबो. ओके देन आल्सो सर्व शिक्षा अभियान. ओके सर्व शिक्षा अभियान. ओके सर्व शिक्षा अभियान रे कोन अछि? सर्व शिक्षा अभियान रे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक अछि. बहुत सारा स्कीम्स आसु स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर स्किल टू द वुमेन, ठीक अछि. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी, ओके ए सब बहुत सारा साहेली सखी बहुत सारा प्रोग्राम आसु. सो दैट इज व्हाट दिस इज द प्रोग्राम. कोन से थेंस पांचटा क्वेश्चंस मु करेबी रेगुलरली गोटे असाइनमेंट क्वेश्चन देबी. मन रख ए बडा क्वेश्चंस रे टिके डिटेल बुझा पड़ियो इंडिया रा स्कीम्स कोन ये कोन से जो ज्योग्राफी इज वेरी डायनामिक सब्जेक्ट. इट आल्सो हेल्प्स इन द करंट अफेयर्स. गोटे असाइनमेंट मु दोची पुनी नेक्स्ट पुनी हमर देखा हबो. एटा असाइनमेंट मु देली आकु कोन करिवो तमे पढ़ी की तमरो हमर चैट बॉक्स रे तमे तम पछर ताकू तार आंसर ता दबो. ओके आउ पुनी नेक्स्ट क्लास रे मु आकु डिस्कस कर दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडियन कोल. सब दे दैछि मते आंसर आर दरकार. ता पूर्व मु जस्ट गोटे अनाउंस करबी ओडिशा सिविल्स जो थ्री के हमर ऑलरेडी मेंस रो बैचेस आरंभ हेछि. ऑप्शनल हो कि जीएस रे भी ऑलरेडी नुवा स्टार्ट हेछि. टेस्ट सीरीज बर्तन बहुत इंपोर्टेंट. बहुत पिलांकर मोर क्वेरीज आछि सर टेस्ट सीरीज विषय कोन करछन. यस टेस्ट सीरीज 2 नवंबर रु टेस्ट सीरीज स्टार्ट होबे जाउछि, राइट? टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2 नवंबर. मन रख 2 नवंबर रु आरंभ होछि टेस्ट सीरीज हला. 2 नवंबर रु आरंभ होछि टेस्ट सीरीज. सो डू जॉइन ऑन दिस वन. बोथ एटा हला तमर जनरल स्टडीज पई प्लस जदी देखिबो कि ऑप्शनल पई भी सेम जिंस. Also it start from the 2 November ru आरंभ हो जो टेस्ट सीरीज. ओके 2 नवंबर रू also started same GS और एटा बैचेस जति हम कहबी ऑलरेडी ऑप्शनल अछि. GS रे भी ऑलरेडी those batches have started, right? So do join with us and we'll changes the very dimensions and the quality enrichment. This is basically a quality enrichment program for the making the bureaucrats. Okay, so thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Any questions, any queries, let me know. Any questions who wants? Acha contact me jo mane contact kariyo ki ichha then do contact me on the my contact number.
contact number on WhatsApp 797 samutra likha ichi 8090972, right? Do contact, and also WhatsApp, okay, also WhatsApp bhi ache, right? Also contact, this is your contact number, theek hai, contact kariye, okay, for everything. Thank you so much, thank you everyone, thank you, thank you, thank you Vision, thank you everyone, thank you, we'll again meet, thank you so much, thank you, have a good day, thank you so much, thank you, bye bye, thank you.